Hello, friends, and welcome to this lesson. In this lesson, we are going to talk about a very, very important and powerful framework. This framework is known as the DRC framework. Won't find this in books, you won't find this in other videos because this is something that I created for all of you. दोस्तों, आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसे DRC फ्रेमवर्क या ढांचा कहते हैं. ये दूसरी किताबों और वीडियोस में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसे मैंने तैयार किया है अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए. आइए देखते हैं क्या है DRC. सो दिस इज आवर एजेंडा टू क्रिएट द DRC फ्रेमवर्क फॉर फ्लुएंसी इन इंग्लिश. It's very, very simple, and you feel, why is it so simple? And because it is so simple, you'll be able to implement it perfectly. And when you implement it perfectly, you'll have amazing results. What is content? Now, we have talked about content earlier also. So content is, everything that you want to convey. Your thoughts, your ideas, your feelings, concepts, data, facts, figures, everything is content. दोस्तों, हमारा कंटेंट क्या है? हमारा कंटेंट है हमारे विचार, भावनाएं, धारणाएं, हमारा डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स जो हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं. जो भी चीज़ हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वही कंटेंट है. सो दैट इज इट. एंड कंटेंट जो है उसके 4 पर्पस होते हैं कम्युनिकेशन में. 4 मेन पर्पस. Friends, the 4 main purposes of content are to inform, to explain, to persuade, to motivate. And in one communication, there may be 1, 2 of these purposes or all 4. So be very clear about the purpose. What am I trying to inform? What am I trying to explain? What is it that I have to persuade them for? What kind of motivation should I provide so that they feel more persuaded? Call to action. There is a call to action everywhere. So what action do you want them to take? दोस्तों, हमारे 4 मुख्य ध्येय होते हैं. सूचित करना लोगों को, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना, बताना. व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना उसी चीज़ को या दूसरी चीज़ों को, या क्या होगा, कैसे होगा. मनाना लोगों को, जो हम चाहते हैं वो करवाने के लिए मनाना. जो कॉल टू एक्शन हम देते हैं उसके लिए मनाना. और हमारे हिसाब से काम करने के लिए, या जो सिस्टम या जो टारगेट या जो भी हमने दिया है उसके लिए उन्हें बार बार प्रेरित करना. तो ये हमारे मुख्य पर्पस होते हैं, मुख्य उद्देश्य होते हैं कम्युनिकेशन के. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, raw material for my content, of course we have talked about it earlier also, is thoughts, ideas, feelings, data, facts, figures, and my call to action. So this is what I have to now structure. This is the king. This I have to structure now. तो दोस्तों, हमारे पास हमारे विचार, भावनाएं, डेटा, तथ्य, आंकड़े, कार्यवाही के लिए बुलावा, हम क्या उनसे करवाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. यही हमारा कंटेंट है. और हमारी महारत इसमें है, इस कंटेंट को हम कितना ब्यूटिफुली ब्लेंड करके बना सकें जिससे हमारी जो कॉल टू एक्शन है वो पूरी हो. फ्रेंड्स, द रियल चैलेंज हियर इज हाउ टू यूज माई थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स in such a powerful, effective way that my call to action will be heeded, will be answered positively. So everything has a 3-part structure which is known to all of us. What is the 3-part structure? Beginning, middle and end. Introduction, main body, conclusion. Everyone knows. All stories have this structure. Movies have this structure. Everything has this structure. Novels, there'll be a beginning part, introductory part, there'll be a concluding part, and in the middle there'll be a lot of crisis, action, tension, suspense. Movies also same thing. Stories also same thing. दोस्तों, जितने भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें एक है इंट्रोडक्शन, जो उसका शुरुआत, मध्य और अंत, परिचय, शरीर और निष्कर्ष. तो यही 3 भाग हैं.
इन्हीं में सारा गेम होना है। सारा कंटेंट जो हमने देखा अभी तक उसको इन्हीं 3 भागों में विभाजित करना है, वहाँ पे स्ट्रक्चर करना है जिससे वो स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, रिच, इफेक्टिव हो जाए। यही करने का साधन है हमारा DRC फ्रेमवर्क। सो माय डियर फ्रेंड्स, द DRC फ्रेमवर्क इज अ पावरफुल वे टू स्ट्रक्चर योर कंटेंट in 3 parts. So the first part, which is the introductory part, is the defining phase, as I call it. In this phase, define your topic, define your purpose, define why you came there, so that the audience knows what to expect from your presentation or your talk, and define what gains they might have in this, what they might benefit from. So if you do that in the beginning of your talk, you have put everything in context, in perspective, and audience will be with you. Oh, he's doing this for me, okay, there's this in this, all right, and I might get this also. Oh my god, I have to listen carefully. Oh, okay, yeah. This is the power of this DRC framework, that in the introduction, when you set the context, create a perspective, define things, people will get hooked to you straight away. Why? Because now you have them with you. So that's the way in which you catch their hand, bring them in, where you extend a helping hand to them. Aye, come to my house, come inside my mind, see what I'm thinking. So you bring them in through this define. दोस्तों, शुरू में किसी भी टॉक में, टॉपिक में, प्रेजेंटेशन में हमें चीज़ों को परिभाषित करना है। जब तक वो परिभाषित नहीं होंगी, हम क्यों आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, कुछ क्लियर नहीं होगा श्रोताओं को, ऑडियंस को। कोई नहीं सुनेगा आपकी बात अगर आप कहीं से शुरू कर रहे हैं, कहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रक्चर होगा तो सब आपकी बात सुनेंगे। शुरू से ही आप हाथ पकड़ के अंदर खींच लेंगे उनको कि भैया ये चीज़ें हैं, ये आपके लिए है, ये सबके लिए है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हम सब के लिए है, और इस तरह से हम सबको बेनिफिट हो सकता है। ये सब मैं आज बताने वाला हूँ। आदमी कह रहे यार सुनना ज़रूरी है, तो ठीक बोल रहा है, इसने तो डिफाइन भी अच्छी तरह कर दिया। You understand, my dear friends? So this is your technique of bringing people into your talk, into your system. Now we go to the second part, which is the main body. Main body is always bigger than the introduction and the conclusion. Naturally, the main body is always bigger. So in the main body, we are going to refine, and we are going to give examples, we are going to quote data, we are going to give arguments, so that people will be convinced about what we are saying. So this is the part where you have to build your case, where you have to really give evidence. Most of the time we feel that people would have understood what we are trying to say. No, people never understand. You have to make them understand. Through examples, through data, through facts, through figures, through different analogies. So that's your skill as a speaker. How well you can make them understand. That's why I said to inform, to explain, to persuade, to motivate. So put in everything here. This is the real story. Craft it beautifully. Refine it. Refining means purifying. Cut out the wastage. Cut out the dirt. Give them the pure diamond there. So your ideas, your thoughts, what you are proposing is like a diamond. You have to cut that diamond, make it shine. So this is that phase. Refine. Purify your idea. Purify your premise. Purify the points you came to make. All right, prove your point. Before you conclude,
If you have refined well, your audience would have concluded that. You understand? Your audience would already have concluded that. That would be the beauty and power of this part, the main body. दोस्तों, मुख्य भाग में हम परिचय में कही गई बातों को परिष्कृत करते हैं. अब उनको हम विस्तार करते हैं, उनका प्रमाण देते हैं. लोगों के दिमाग में वो बातें ऐसे बिठा देते हैं जैसे सदा उन्हीं के दिमाग में थी. जैसे एक हीरे को तराशा जाता है, हम अपनी बातों को, अपने पॉइंट्स को तराशते हैं और लोगों के दिमाग में फिट कर देते हैं. डेटा, तथ्य, आंकड़े, ये सब हम साथ साथ देते हैं और अपनी बात को साबित करते हैं. और जब तक हम तीसरे भाग तक जाएं, तब तक लोग ऑलरेडी हमारी बात मान चुके हों, तब मजा आएगा. तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बड़ा पावर चाहिए, बहुत थॉट चाहिए, बहुत क्लैरिटी चाहिए. इसे परिष्कृत करना है, हमें रिफाइन करना है. ये है रिफाइन. कभी कोई इस तरह से नहीं समझाएगा आपको. इसको दिमाग में बिठा लीजिए. फ्रेंड्स, सेट दिस हियर इन योर ब्रेन. डिफाइन, रिफाइन. नाउ आई कम टू कन्फाइन. व्हाट इज कन्फाइन? व्हाट इज कंक्लूजन? In the concluding part, we put everything in a nutshell, give it to the audience to take home, plant the seed in their mind, and this contains the call to action as well. So, the diamond that we had refined in the main body is now presented to them in the form of a ring or something else, which they will take back, which will remain with them. The call to action will also remain with them. It will ring in their ears, it will move around in their mind, and they will be compelled to take the action. This is confine. This is the power of this system, of this framework that I am telling you. You will not find it elsewhere. दोस्तों, समापन में हम संक्षेप में सारी चीज़ें संकलित करके, सीमित करके दर्शकों को एक गिफ्ट के रूप में दे देते हैं, जिसे लेके वो घर जाएं. हम जो कार्यवाही उनसे कराना चाहते हैं, कॉल टू एक्शन, वो उनके दिमाग में घूमे, हमारे शब्द उनके कानों में गूंजें और उनके दिल से ये आवाज़ आए कि इसने जो कहा सही कहा, चलो ऐसा करते हैं. फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल सिस्टम, DRC framework. Listen to this video again and again till you get it in your mind and till you start using it. Now, I've told you everything about the framework. I want to tell you one more thing, how to divide your time between these three phases. So there are three phases in the DRC framework. Defining the topic, context, and what the audience may expect is in the first part. In the second part, you have to refine the topic through examples, data, facts, and figures. In the concluding part, you have to confine the topic into a capsule. Now, how much time should you spend in define? How much time should you spend in refine? How much time should you spend in confine? Friends, the day is divided into 12 hours and night is divided into 12 hours. I am talking about the 12 hours of daylight. Now, your midday, which begins around 9, ends around, say, midday would go on from 9 to about 3, and then evening time would begin. If it's 6 to 6, if you take it 9 to 9, then midday would begin at 12, go on till 6. So, midday is always bigger. Dopahar, that's why we call it Dopahar. In Hindi, Pahar is 3 hours and midday is always Dopahar. One Pahar is morning, one Pahar is evening, and the middle of the day is always Dopahar. दोस्तों, 2 पहर होते हैं बीच में. So the middle is always bigger. If you look at a human life, childhood and old age,
will be smaller than the middle age, which stretches from the 20s to the 60s sometimes, nowadays. So, this you have to understand. The middle part is going to be almost double the other two parts. And based on your content, now you have to divide them in a nice manner. So, my dear friends, I hope you have firmly installed the DRC framework inside your brain and start using it. And we'll be using it as we go along. So, thanks a lot, friends, for watching this lesson. I'll see you in the next. Until then, all the best.